Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ए rhyme टाको आमे पिला दिनु पढ़े के आम पिला को भी सिखोचे. But my question is how many of us are really into this? आमे जानी छे जंक फूड खाइबा भलो नुहे, मेडिटेट करिया भलो, साइलेंटली बसिबाटा भलो, मोबाइल देखियाटा भलो नुहे, रील्स को स्क्रॉल करियाटा भलो नुहे, that affects our brain. But केते जण सेटा फॉलो करूचे? Yes. आमे जानी छे बहुत किछि बट करूने. So this video is all about from knowing to doing. Last video रे हमरो डिस्कशन हेतला how skill is more important or equally important as knowledge, and this video will get to know कि से knowledge टाको आमे केमिति जो knowledge टाम पाखे अछि ताको नै कि आमे केमिति निजरो skill set टाको build करि परिबा. तो गोटे स्किल सेट को बिल्ड करिया पई कि हेले फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड सहित पैरेलली जिबा पई का the only thing, the first thing, the last thing is to take action. कहना पुजमती कहली आमे जानी छे बहुत किछे बट करूने. जदि आमे जतिक जिंस जानी छे तार 10% भी आमे एक्शन रे कन्वर्ट कर दबा ना हमरो 60% of improvement will definitely be there. But the problem is कि we don't take action. We only accumulate knowledge from social media but we don't take action to do it. So आज मु आपन को तीनटा स्ट्रैटेजी कहबे जोटा कि से स्ट्रैटेजी टाको आपण जदी फॉलो करूछंती डेफिनेटली आपण कॉन्फिडेंट भी फील करिवे आपण रे इंग्लिश टा बेटर भी हे परिबो. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू टेक एक्शन. से एक्शन टा कोन ना इंग्लिश टाको भलो कहबा पई हेले बहुत सारा ऑप्शंस अछि बट आपण बाछंतु आपण को कोटा भलो लागुचे करिया पई. सो केते जन को न्यूज़ चैनल देखियो भल लगे, केते जन को स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ देखियो भल लगे, केते जन को मूवीज, केते जन को गीत सुनियो, केते जन को बुक्स पढ़िया को, नॉवेल्स पढ़िया को, मैगजीन्स पढ़िया को, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िया को, जहाँ भी भल लागुची यू चूज वन आउट ऑफ मेनी. हला सेटा करिवे. फर्स्ट हला टेक एक्शन. गोटे को चूज करके से एक्शन टा को नियंतु. सेकंड स्ट्रेटजी इज यू टेक दैट एक्शन विथ फुल डिवोशन. फुल डिवोशन माने कौन? सपोज गोटे एग्जांपल तौर रे मु कहूची आपन को बुक्स पढ़िया को भल लागु गोटे शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश आपन परचेस करके पढुचंदी या किंडल रे भी आपन ई बुक पढुचंदी. ठीक अछि जोडा आपन को कंफर्टेबल लागुची, कन्वीनियंट लागुची, डू दैट. सेटा को पढ़िले विथ डिवोशन माने आपन सपोज गोटे शॉर्ट स्टोरी गोटे दिन रे पढ़िले तो से स्टोरी रो आपन न्यू वर्ड्स कोन सिखिले सेटा को हाईलाइट करन. तो सेही वर्ड को यूज करके निजरो ओन सेंटेंसेस लिखंतु. लिखिला परे से सपोज आपण पांचटा न्यू वर्ड पाइले से पांचटा एटलीस्ट गोटे वर्ड को आपण डे टू डे कन्वर्सेशन यूज करिया पई का चेष्टा करंतु. राइट एटा हला दैट इज दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टेकिंग एक्शन विथ डिवोशन. प्लस आपण पढ़िला बेले आपण बुझी पारुचंती, बुझिला माने आपण कनेक्ट करि पारुचंती कि ए सिचुएशन को इंग्लिश रे एमिति लिखा जाय या कुहा जाय. राइट सो दैट्स हाउ यू नीड टू मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग यू नीड टू पुट लिटिल मोर फोकस इनटू दैट. हला दैट इज कॉल्ड एज take action with devotion. Third is consistency. जो action टा आपण नेले सेटा को devotion देबे और consistently करिवे. प्रथम थर आपण 7 दिन पई करंतु. only for 7 days you do it. 8th day रे you comment me on this video कि आपण केमति लागु छै. I guarantee you आपण 7 दिन पूर्व जो स्टेज रे थिबे आपनकर 30% improvement for sure हबो. जदी न हेतिबो you get connected with me, I'll guide you further. मुझे जदि कनेक्ट करुचे श्रीमद् भगवत गीता सहित तो अर्जुन भी जिते बड़े कुरुक्षेत्र रे वॉर टाइम रे अछंती लॉर्ड कृष्ण तांको कहूनांती ओनली कि व्हाट इज राइट. कृष्ण गाइड्स अर्जुन टू टेक एक्शन विथ करेज विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. बिकॉज अर्जुन भी भाबुचंती कि अपोजिशन मोर निजर लोक मु केमती तांको प्रति एक्शन नेबी, केमती मारिबी, तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन हबो. सो देयर कृष्ण गाइड्स हिम टू टेक एक्शन विथ करेज विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. तो आपण भाबंतुनी कॉन्सिक्वेंसेस कोन हबो, मु केते जल्दी सिखिबी, कोनटा हे जिवो थ्रू. डोंट थिंक इन दैट वे. जस्ट यू टेक एक्शन विथ फुल डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी एंड सी द रिजल्ट्स ऑन 8th day. See, जोठी हमरो विजडम ता एक्शन रे कन्वर्ट हैला, that's where growth begins and peace lies. Yes. If this message resonates with you, do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Namaskar.